Hello, my dear students. Joy Jagannath. Welcome to the session. So today we are going to study about pedagogy of social science. So unit 1 रे हमर रहुची कोन ना social science as a integrated area of study. Okay. So तार देखि दबा कौन points सब रहुची 1.1 meaning nature and scope of natural and social sciences. Then 1.2 रे distinction between natural and social sciences. 1.3 रे meaning history, nature, scope and development of social study. 1.4 रे distinction between social science and social studies. Then 1.5 रे understanding society through various social sciences. Okay, so first हमें elaborate करिबा 1.1 meaning nature and scope of natural and social sciences. So first हमें जानिबा natural science कौन. Okay, जे तमे start करिबा मीनिंग आउ नेचर आउ स्कोप रहुची कहार ना नेचुरल साइंस आउ सोशल साइंस तो फास्ट हमें जानिबा नेचुरल साइंस कौन. ओके, व्हाट इज नेचुरल साइंस? Natural science is a branch of science. It concerned with the description, prediction, and understanding of natural phenomena. It based on observational, empirical evidence. Okay, तो बेसिकली नेचुरल साइंस कौन करता है ना ये हूँ आम गोटे नेचुरल फेनोमेना को स्टडी करता है जोटा कि आम कौन सी जिनस को डिस्क्राइब करूँ प्रेडिक्शन करूँ अंडरस्टैंडिंग क्या बुझीपर निजे बुझीपर. ओके, तो नेचुरल फेनोमेना माने आमर पारिपार्श्विक अवस्था पारिपार्श्विक घटना एवं पारिपार्श्विक तथ्य एवं जो आमर डाटा को रोचे ताकू आकलन करके आम जो जिनस को प्रेडिक्शन करिथाउ एलाबोरेट करिथाउ डिस्क्रिप्शन जार देइथाउ जोटा कि अन्य मानक बुझेबा को सहज होता है. सो ताको आम नेचुरल साइंस बोली कही था जोटा कि एम्पिरिकल एविडेंस ऊपर बेस्ड थाए. ओके, किसी पर्टिकुलर एविडेंस थिले ही से साइंस तू अप्लाई करके आम किसी नुआ आउटपुट काढ़ी पारिबा. ओके, then natural science can be divided into two main branches. What? ना life science और physical science. Okay, life science जोटा होची biological science रे जाउची, physical science ता में जानिचु physics, chemistry, astro, earth science ए सब से रे जाउची. Okay, then असला meaning of science. Science कौन? विज्ञान कौन? Science refers to a system to acquiring knowledge. Okay, science गोटे एमितिका system जो कि आम कौन करि परिबा ना knowledge को acquire करि परिबा. जे कोनोसी knowledge को आम भलो भाबरे acquire करि परिबा science विज्ञान माध्यम रे. Then it is the interpretation and investigation of event in the natural physical environment and within our bodies. Okay, तो basically कौन ना इटा हूँ गोटे नेचुरल फिनोमिना एनवायरनमेंट द्वारा आम सब जिनस को इन्वेस्टिगेशन करवा तार इंटरप्रिटेशन काढ़ा. ओके, जेकोसी इवेंट हेल्ले तार आम नेचुरल वे काढ़ा फिजिकल वे काढ़ा सब किसी जिनस को जो तनाघना करवा टेक्निक. ओके, तो ताको आम कौन कही था ना विज्ञान बोली कही था. देन साइंस इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड scientia. Okay, then which means to know or knowledge. Okay, so science is a body of systematic knowledge. Science refers to a highly skilled technique or practice. Okay, science कौन करता है ना highly skilled technique और practice ऊपर ही बेस्ड है. Then science is an observation, identification, description, एक्सपेरिमेंटेशन इन्वेस्टिगेशन इन नेचर. ओके, विज्ञान सब बड़े कौन ना ऑब्जर्व करिवो आइडेंटिफाई करिवो डिस्क्राइब करिवो. ओके, एक्सपेरिमेंट करिवो इन्वेस्टिगेट करिवो. विज्ञानर नेचर विज्ञानर माइंडसेट हूँ यहाँ जे सी आग ऑब्जर्व सब जिनस को तना घना कर सारा पर ही तार आउटपुट तार माने ट्रू नॉलेजटा आमको दब. ओके, देन लैमैन कौन कहते ना साइंस इज ए बॉडी ऑफ साइंटिफिक इनफॉरमेशन. साइंस हूँ कौन ना बॉडी हूँ साइंटिफिक इनफॉरमेशन. देन साइंस ऑब्जर्वेशन आइडेंटिफिकेशन डिस्क्रिप्शन एक्सपेरिमेंट आउ इन्वेस्टिगेशन आपको नहीं कि ही विज्ञान. ओके, सो देन थ्री फोल्ड नेचर ऑफ साइंस कौन ना इट इज ए बॉडी ऑफ नॉलेज, इट इज ए मेथड ऑफ इंक्वायरी, ए वे ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग, इट इज एन एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ, ए वे ऑफ थिंकिंग. ओके, तो बेसिकली देख कौन ना तीन टा फोल्ड हूँ साइंस नेचर साइंस कौन ना यहाँ हूँ नॉलेज बॉडी यहाँ गोटे पार्ट. ओके, देन इट इज ए मेथड ऑफ इंक्वायरी वे टू इन्वेस्टिगेट यहाँ गोटे वे गोटे मेथड जे आम केमी इन्वेस्टिगेट करवा केमी इंक्वायरी करवा. ओके, देन इज एन एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ, ए वे ऑफ थिंकिंग. ओके, देन साइंस आज व्यूड बाय डिफरेंट पीपल कौन ना लैमान द्वारा कौन कही ना साइंस इज ए बॉडी ऑफ साइंटिफिक इनफॉरमेशन. साइंटिस्ट मैंने कौन कही ना साइंस इज ए मेथड बाय व्हिच हाइपोथेसिस आर टेस्टेड. ओके, बेसिकली देख सी कहले साइंस हूँ गोटे बॉडी जहाँद्वारा कि आम कौन करते ना साइंटिफिक इनफॉरमेशन
खोजी थाउ बा पाई थाउ देन साइंटिस्ट मैंने कहले साइंस इज ए मेथड बाय व्हिच हाइपोथेसिस आर टेस्टेड ओके हाइपोथेसिस मीन्स कौन ना कहार किसी आम गोटे कल्पना करवा कौन से आम मन जहाँ भी गोटे जिनस नुआ किसी इनभेंट हम ताको आम टेस्ट करवा ओके ताको ही विज्ञान आम कही था जहाँ भी किसी न्यू जिनस न्यू आइडिया आम माइंड को आस जहाँ भी किसी न्यू जिनस न्यू डाटा आम पाचे ओके ताको आम इन्वेस्टिगेट करके तार आउटपुटा काढ़ा ओके देन फिलोसोफर मैंने कौन कहले साइंस इज ए वे टू ट्रुथफुलनेस ऑफ नॉलेज ओके साइंस गोटे एमती का वे जो कि आम कौन ना नॉलेज ट्रुथफुलनेस को जापर था ता भर सत्यता के तार सत्यता के माने केते मिथ्या अच्छी के सत्यता अच्छी ओके तो फिलोसोफर मान मतरे या साइंटिस्ट मान मतरे हूँ जे आम हाइपोथेसिस को आम टेस्टेड करने ही आम साइंस कही था लेमन कहते साइंटिफिक इनफॉरमेशन पाई साइंस हूँ गोटे बॉडी ओके देन nature of science is the system of knowledge where knowledge and facts are related together okay science होची गोटे एमितिका सिस्टम जो knowledge और fact together हेकी काम करती okay then science is a both product and process science यूज करो ना product science भी होची process science द्वारा ही product आसी थाए then ता द्वारा भी process भी चली थाए then science is a systemized learning okay science adopt scientific method which is valid reliable and objective ओके जो साइंस गोटे एमती साइंटिफिक मेथड जे जो कि कौन ना वैलिड और रिलायबल ऑब्जेक्टिव आम काढ़ी था ओके देन साइंस इज बिल्डिंग अफ सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड सेल्फ एस्टीम ओके साइंस कौन करता है नाम भितर सेल्फ कॉन्सेप्ट और सेल्फ एस्टीम को एनहांस करता है देन साइंस इज डिमांड एविडेंस साइंस कौन करता है ना एविडेंस को डिमांड करता है बिना प्रमाण किसी तो बिना एविडेंस तो आम किसी नुआ नुआ जिन क्रिएट कर ना आमको एविडेंस दरकार किसी जजमेंट दवा लगी सो देन साइंस स्टडी डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड एमंग द पीपल्स साइंस कौन करते हैं ना डेवलप करता है साइंटिफिक एटीट्यूड को लोक मान भितर देन साइंस इज डायनामिक चेंजेस मल्टीपल डायमेंशनल चेंजेस साइंस ही थाए ओके देन साइंस प्रेडिक्ट्स फ्यूचर साइंस द्वारा आम कौन करता ना फ्यूचर को भी प्रेडिक्ट कर पार सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंस कौन ना purposiveness, reflection, objectivity, prediction, reliability, description, validity, natural, inquiry, explanation ओके ये सब रोचे साइंस कैरेक्टरिस्टिक्स जहाँद्वारा कि कौन ना आम कि माने न्यू न्यू सब इवेंट को ऑब्जर्वेशन करिकी किसी पुराना जिनस को भी ऑब्जर्व करिकी ताको एनालाइज करिकी तार आउटपुट आम काढ़ी पार था तार केते नेचुरालिटी रोचे ताको इनक्वारी करि थाउ तार वैलिडिटी जानि थाउ तार रिलायबिलिटी भी जानिବାକୁ चेष्टा करि थाउ ऑब्जेक्टिविटी तार कौन रोचे नुआ नुआ जिनस को आम प्रेडिक्शन भी करि थाउ ओके पर्पसिवनेस से माने से जिनस कौन रोचे ओके देन रिफ्लेक्शन कौन रोचे तार डिस्क्रिप्शन एक्सप्लेनेशन सब किसी साइंस द्वारा ही आम पाई थाउ देन इट इज ए मेथड ऑफ इनक्वारी ओके यहाँ हूँ गोटे मेथड ऑफ इनक्वारी टू नॉलेज कैन बी प्रूवेड आम नॉलेज को आम प्रूव करने यहाँ हूँ गोटे मेथड देन डिपेंड ऑन रीजनिंग एंड रिफ्लेक्शन जोटा कि रीजनिंग और रिफ्लेक्शन ऊपर डिपेंड करता है इट इज द एम्पिरिकल इन नेचर ओके देन इट मेक्स प्रेडिक्शन डिस्क्रिप्शन एंड एक्सप्लेनेशन इट इज प्योर ओके तो साइंस कौन करता है ना प्रेडिक्शन करता है डिस्क्रिप्शन देता है एक्सप्लेनेशन भी देता है यह सत्य देन इट इज फॉर्मुलेटेड लॉ भी फॉर्मुलेट करता है वैलिडिटी रिलायबिलिटी और ऑब्जेक्टिविटी ओके then importance of science and technology have been of great importance to the development of country okay science is important in our lives because it advantages our lives okay विज्ञान पाई आम जीवन आज गोटे आधुनिक दुनिया रे पहुँची जाइए विज्ञान पाई ही आज सबकि आम ये वर्चुअल क्लास भी नौचे विज्ञान पाई ही यहाँ संभव कहीं सबकि जिनसर आदि फास्ट विज्ञान रोचे तार अंतर भी विज्ञान रोचे ओके तो साइंस हूँ सब जिनसर माने मदर कह गले चले ओके जेकोसी जिनसर आम इनभेनसन करुचे पछरे विज्ञान हाथ रोचे then it deals with new creation invention and discovers it has impact on different fields agriculture health home products industry and welfare तो सबकि जिनस आम साइंस हाथ रोचे जमीक कौन ना न्यू न्यू क्रिएशन इनभेनसन डिस्कवरी कर ओके जो जमीक को फील्ड ना एग्रीकल्चर न्यू न्यू सब जो इक्विपमेंट सब इनभेनसन हो न्यू न्यू मेथड सब इनभेनसन हो एग्रीकल्चर अप्लाई करें भल भल सब उपाय द्वारा न्यू न्यू सब माने जो आम सीड सब उत्पन्न करुचे माटी परीक्षा करुचे ओके जिते भी सब एडवांटेजेस आम पाचे सब कौन ना साइंस रू देन हेल्थ रे तो मैंने साइंस लेवल पूरा ऊपर हो जाए ओके देन होम रे भी होम प्रोडक्ट्स रे भी ओके इंडस्ट्री लाइन रे भी सबुथ वेलफेयर रे भी सबुथ विज्ञान 100 to 1% 100 to 100 ऊपर परसेंट कौन ना तार अवदान रोचे देन
साइंस also deal with human environment and other problem. ओके साइंस कौन करते हैं ना ह्यूमन रो जहाँ भी प्रॉब्लम रोची डेवलपमेंट रे सॉरी ह्यूमन एनवायरमेंट रे और अदर जहाँ भी प्रॉब्लम रोची सबुथिरे कौन ना साइंस रो हाथ थाए. Then scope of science कौन ना physics is the study of mechanical purpose. ओके physics होची कौन ना गोटे स्टडी जो कि mechanical purpose ऊपर हमर स्टडी करा जाई थाए. chemistry is the study of different chemical used in different reaction. ओके chemistry कौन करी थाए ना सी गोटे एमती को स्टडी जो कि हमें डिफरेंट केमिकल्स को केमी डिफरेंट रिएक्शन रे यूज करि परिबा ता ऊपर हमें स्टडी करथाउ. एस्ट्रोनॉमी इज स्टडी ऑफ होल यूनिवर्स. ओके होल यूनिवर्स ऊपर स्टडी करिया को हमें एस्ट्रोनॉमी कहिथाउ. बॉटनी को स्टडी ऑफ प्लांट एंड इट्स यूजेस. ओके बॉटनी होजी हमें प्लांट आ तार यूजेस ऊपर स्टडी करथाउ. जूलॉजी होजी स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी ऑफ एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स. ओके तो जूलॉजी होजी कोन ना स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी तार ताकू कंबाइन करके आम जूलॉजी को पढ़ी था जोटा कि एनिमल्स और ह्यूमन का ऊपर प्रेडिक्टेड थाए. देन सोशल साइंस आसला एबे हम जानते नेचुरल साइंस साइंस बोली. देन आम जानिए सोशल साइंस कौन. ओके सो सोशल साइंस इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन रिलेशन इन सोसाइटी. ओके तो सोशल साइंस हूँ गोटे एमतीका स्टडी जो कि ह्यूमन रिलेशन उपर आम स्टडी करें सोसाइटी ह्यूमन मानकर कौन इंपोर्टेंस रोचे ह्यूमन मानकर कैरेक्टरिस्टिक्स कौन रोचे एक्टिविटी आम स्टडी करें. देन इट इज द स्टडी ऑफ द एक्टिविटी ऑफ सोशल एंड फिजिकल एनवायरनमेंट. ओके यहाँ कहा बेस्ड थाए ना सोशल और फिजिकल एनवायरनमेंट उपर. ओके देन social science include history, geography, political science, economy, anthropology and sociology. Okay basically कौन ना social science का ऊपर बेस्ड थाए ना हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस इकोनॉमी एंथ्रोपोलॉजी एंड सोशियोलॉजी. ओके सो देखिया डिस्टिंक्शन 1.2 आसला डिस्टिंक्शन बिटवीन नेचुरल साइंस एंड सोशल साइंस. ओके सो डिफरेंस कौन रोची ना नेचुरल साइंस अंडर किए आसुछन्ति ना एस्ट्रोनॉमी केमिस्ट्री जियोलॉजी फिजिक्स बायोलॉजी ये सब नेचुरल साइंस आसुछन्ति. और सोशल साइंस रे ह्यूमैनिटी फिलोसॉफी इकोनॉमिक पॉलिटिकल साइंस और कल्चरल साइंस आसुछि. ओके देन आमे जानिबा नेचुरल साइंस और सोशल साइंस डिफरेंस. गोल कौन रोची ना अंडरस्टैंडिंग फिजिकल वर्ल्ड. नेचुरल साइंस गोल रोची फिजिकल वर्ल्ड को अंडरस्टैंड करवा भौतिक जगत को अंडरस्टैंड करवा. बट सोशल साइंस कौन ना अंडरस्टैंडिंग इंटरैक्शन इन सोसाइटी. ओके सोसाइटी रे जहाँ भी सब प्रॉब्लम चलती सोसाइटी रे जहाँ सब बेनिफिट रोची सोसाइटी रे जहाँ हालचाल रोची ताको सब अंडरस्टैंड करने को आम सोशल साइंस बोली कही था. देन प्रेडिक्शन कौन ना सॉरी प्रेडिक्शन ने आसूची नेचुरल साइंस प्रेडिक्शन पॉसिबल. ओके नेचुरल साइंस प्रेडिक्शन पॉसिबल बट सोशल साइंस लो प्रेडिक्शन पावर. ओके एते डीपली आम प्रेडिक्शन करिपरिबा नाही सोशल साइंस विषय. देन ऑब्जेक्ट ऑफ स्टडी कौन रोची नेचुरल साइंस फिजिकल वर्ल्ड भौतिक जगत बट एटी सोशल साइंस सोशल इंटरप्रिटेशन. ओके सामाजिक इंटरप्रिटेशन रोची. देन मेथोडोलॉजी कौन आसूची सोशल साइंस सॉरी नेचुरल साइंस ना साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट साइंटिफिक द्वारा एक्सपेरिमेंटल द्वारा ऑब्जर्वेशन करिकी मेजरमेंट द्वारा क्वांटिटेटिव द्वारा पर्टिकुलर माने गोटे टेंटेटिव सॉल्यूशन द्वारा माने सॉरी टेंटेटिव सॉल्यूशन तो नहीं माने पर्टिकुलरली गोटे स्टेजेस को जाइकी आमे कौन करथाउ ना नेचुरल साइंस मेथड को आम फॉलो करिथाउ. बट सोशल साइंस कौन होता है ना साइंटिफिक थाए भेरिफिकेशन थाए. ओके जो कि हम भेरीफाई करथाउ ऑब्जर्वेशन भी करथाउ इंटरव्यू एंड सर्वे करथाउ सोशल साइंस रे. ओके क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव बोथ डाटा एथिरे एक्सपेरिमेंट हेई थाए. देन लिमिटेशन जानिबा नो क्वेश्चन ऑफ जजमेंट मोरल वैल्यू एक्सेट्रा. ओके लिमिटेशन ने नो जजमेंट पाई किछि क्वेश्चन एते न थाए बट क्वेश्चनेशन एबिलिटी थाए. देन सोशल साइंस रे कोन ना अलाउज ओनली लिमिटेड नॉलेज ऑफ द प्रिंसिपल वेरिफिकेशन बाय एक्सपेरिमेंट. ओके एक्सपेरिमेंट द्वारा लिमिटेड नॉलेज हमें आपको करी. सो 1.3 मीनिंग हिस्ट्री नेचर एंड स्कोप एंड डेवलपमेंट ऑफ सोशल स्टडी. ओके तो सोशल स्टडी रो मीनिंग हिस्ट्री नेचर और स्कोप कौन रोची ता विषय में डेवलपमेंट विषय भी हमें डिस्कशन करबा. सो लेट्स स्टार्ट. मीनिंग ऑफ सोशल स्टडी अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल मैन इज ए सोशल एनिमल. अरिस्टोटल के हिसाब रे मैन होचंदी गोटे कौन ना सोशल प्राणी. ओके सामाजिक प्राणी होची मनुष्य जो कि मैन कैंट लिव विदाउट सोसाइटी. ओके जो कि मनुष्य के बिना सोसाइटी रही पार ना सोसाइटी निहत भाव में दरकार जो कि कौन ना सोसाइटी बिना मनुष्य रही पार ना और मनुष्य बिना सोसाइटी भी सोसाइटी गणना हम ना. ओके सो बोथ आर इंटर रिलेटेड एंड को डिपेंडेंट. देन मैन इज मैन सोसाइटी डिपेंड अपॉन ईच अदर. ओके सोसाइटी इज ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल. देन इट हेल्प्स हाउ टू रिलेट
टू वन अदर ओके जो कि कौन ना ये हेल्प्स करें रिलेट कर वन एंड अदर विषय ओके देन स्टडी जो कि देख सोसाइटी कौन ना जड़े अन्य जनक प्रति नेबरहुड भाव थाए जोटा कि माने पड़ोसी पड़ोसी भातृत्व भाव ओके ब्रदरहुड ये सब जिन द्वारा कौन ना सोसाइटी तार मैंने किसी नुआ नुआ भेरिएसन आसता है न्यू न्यू डेवलपमेंट होता है रिलीजियस प्रेजेंटिंग थाए ओके देन the life and activity of a man society can be studied in various subject matter okay मनुष्य मानकर various प्रकार सब माने तांकर एक्टिविटी को जो माने देखो आमर सोसाइटी रो ही आमर सब कुछ जिंस क्रिएट होता है ओके मनुष्य को नहीं कि ही किसी सब जिंस रो उत्पत्ति ना ओके सो आम सोसाइटी रो ही सब कुछ जिंस रो क्रिएशन होता है जोथरे कि कोन ना मनुष्यंकर जहाँ भी सब चाली चलणी तांकर जहाँ भी सब माने एक्टिविटी जहाँ भी सब रही आसी अछि आगो काले हो बा एबे हो तो से सब हमको कोथु जणा पड़ता ना हिस्ट्री जणा पड़ता है सिविक्स जना पड़ता है जियोग्राफी भी जना पड़ता है इकोनॉमिक्स जना पड़ता है ओके सोशियोलॉजी सोशल स्टडीज रु तो यही सब जिनस को स्टडी करवा जे कौन कौन सब जिनस कौन कौन सब एक्टिविटी द्वारा मनुष्य मानकर केमिति सब तांकर न्यू न्यू सब इन्वेंशन होउची तांकर डेवलपमेंट केमथि होउची ओके तांकर मोरल एथिक्स वैल्यू सब कौन रहउची सो देखो फास्ट हमर सोशल स्टडी मीन्स कौन ना मनुष्य मानकर तांकर हिस्ट्री जानिबा तांकर नेचर जानिबा सोसाइटी रे एनवायरनमेंट हिसाब रे केमि से माने निजको माने डेवलप करूछन से सब विषय स्टडी करबा को ही हमें सोशल स्टडी बोली कहि थाउ ओके सो हिस्ट्री सिविक्स जियोग्राफी इकोनॉमी एंड सोशियोलॉजी सोशल स्टडी आर इंपोर्टेंट बिकॉज इट इज अंडरग्रेड एंड क्रिएटिंग एक्टिविटी रेस्पॉन्सिबल सिटीजन विद इन सोसाइटी ओके जो कि कौन आपको सब स्टडी करिया जरा आम जानीपरू जे रेस्पॉन्सिबल सिटीजन कौ माने ओके मनुष्य मानक भितर रेस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी कि नहीं तांको भितर सोशल एबिलिटी अच्छी कि नहीं मोरल एथिक्स वैल्यू तांको भितर क्रिएटिंग होची कि नहीं ओके तो केउ केउ सब स्टेप्स से माने दो माने देकी गति करूछंती तांको भितर ईच एंड एवरी इन्फॉर्मेशन को पाइबा को हेले हमको ए सब स्टडी करिवा को पड़िबो ओके देन इट स्टडी सोशल एक्टिविटी ऑफ पीपल एंड देयर रिलेशनशिप विथ द एनवायरनमेंट ओके जोथरे कि कोन ना स्टडी करा जायथे जे पीपल मानकर एक्टिविटी कोन रहउची आ तांको रिलेशन का सहित ना एनवायरनमेंट सहित केमिति रहउची okay then according to John Michaels social study deals with the study of man and his relationship with other men and his environment okay तो basically कौन ना जॉन माइकल के हिसाब रे सोशल स्टडी मीन्स कौन कहाँ से डील करुछि ना रिलेशनशिप विथ अदर मेन एंड हिज एनवायरनमेंट ओके पीपल्स मानकर रिलेशनशिप तांकर अदर जो पीपल्स मानक रहउछि तांको सहित आ एनवायरनमेंट सहित कौन रहउछि ता सहित तो तांकर कॉम्बिनेशन केमिति का रहउछि से सब विषय स्टडी करिया को हम सोशल स्टडी कहथौ ओके तो देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल स्टडी इट डील्स विथ द सोशल एक्टिविटी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स कहाँ से डील करता है ना सोशल एक्टिविटी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स ओके इट हेल्प इन द सोशलाइजेशन ऑफ पीपल्स ओके सोशलाइजेशन क्रिएट करिबारे लोक मानकर हेल्प करता है किए ना सोशल स्टडी देन इट एम्फासाइज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रैक्टिकल लाइफ सोशलाइजेशन मीन्स कौन ना सोसाइटी को ग्रोन अप करिए सोसाइटी डेवलपमेंट ओके देन लॉज आर ह्यूमन मेड एंड सब्जेक्ट टू चेंज ओके लॉज कौन रूल एंड रेगुलेशन लॉज ए सब ह्यूमन मेड ओके मनुष्य मैंने यहाँ को क्रिएट कर ओके देन दिस इज ए कनेक्शन विथ लाइफ एक्सपीरियंस जो थे कि लाइफ एक्सपीरियंस को आम कनेक्शन करिथाउ देन इट बिलीव्स इन द यूनिटी ऑफ नॉलेज सोशल स्टडी कहाँ पर बिलीव्स कर यूनिटी ऑफ नॉलेज ऊपर ओके देन historical background of social science कौन होती ना historical social science originated in USA in 1892 okay a combined study of history economic and political science or social study ओके जोटा कि कौन ना गोटे कंबाइन स्टडी रहउची हिस्ट्री इकोनॉमिक और पॉलिटिकल साइंस और सोशल स्टडी ओके देन इन 1911 sociology also included in this after the World War I the entire world including European country realized the importance of social study okay basically कौन ना 1911 रे sociology include हेतला का सहित ना World War I परे entire world include करथला जोटा कि यूरोपियन कंट्री देन रियलाइज करथिले जे सोशल साइंस रो सोशल स्टडी रो रियलाइजेशन केते रहउची ह्यूमन एनवायरनमेंट को ह्यूमन एक्टिविटी को स्टडी करिवारे ओके देन राधाकृष्णन कमिटी यूनिवर्सिटी कमिशन जो हमें कही था मुदलेर कमिशन कही था कोठरी कमिशन टू रिकॉग्नाइज द नीड ऑफ कोऑर्डिनेशन डिफरेंट सब्जेक्ट एंड एम्फासाइज द इंपोर्टेंस ऑफ सोशल स्टडी ओके देन से गोटे डिफरेंट स्टडी मेड करते जोटा कि कौन ना सोशल स्टडी को एम्फासाइज करिया लगी देन नाउ डेज ए सोशल स्टडी आज ए इंडिपेंडेंट फील्ड ऑफ स्टडी नाउ आज का डेट रे कौन ना सोशल स्टडी गोटे इंडिपेंडेंट फील्ड ऑफ स्टडी भाव में निजर
माने गोटे इंडिविजुअल गोटे स्टेबिलिटी से बनई ओके देन आर द एलिमेंटरी एंड सेकेंडरी स्कूल लेवल्स ओके जोटा कि एलिमेंटरी लेवल ले भी आउ सेकेंडरी लेवल ले भी देन नेचर ऑफ सोशल स्टडी बट ना सोशल स्टडी इज द स्टडी ऑफ सोसाइटी ओके सोशल स्टडी कौन ना स्टडी ऑफ सोसाइटी सोसाइटी विषय स्टडी करने को सोशल स्टडी बोली कही देन दिस इज डील विथ द स्टडी ऑफ मैन एंड हिज फिजिकल सोशल पॉलिटिकल कल्चरल इकोनॉमिकल एंड एनवायरमेंट ओके तो बेसिकली ये क्या सहित डील करते हैं ना फिजिकल एनवायरमेंट सहित सोशल पॉलिटिकल कल्चरल इकोनॉमिकल यही सब एनवायरमेंट सहित आम सोशल स्टडी इनक्लूड होता है डील करता है देन इट इनक्लूड हिस्टोरिक जोग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक होम साइंस सोशियोलॉजी एक्सेट्रा ओके देन स्टडी ऑफ सोसाइटी कौन ना सोशल प्रॉब्लम और चैलेंजेस सोशल स्टडी मीन्स कौन ना सोसाइटी जहाँ भी प्रोब्लेम रोचे चैलेंजेस रोचे तारी ऊपर आम स्टडी करवा ओके दिस कॉल्ड ह्यूमन सेंटर्ड एटा ह्यूमन सेंटर्ड होता है ह्यूमन ही ये स्टडी को करता दिस इज ह्यूमन सेंटर्ड ओके then it deals with study of man-made institution and organization okay man-made institution और organization व NGO द्वारा ही ये study सब complete होता है this is connect our past to our present and help to open opportunity फॉर फ्यूचर ओके तो ये स्टडी कौन होता है ना आम पास्ट सहित रिलेशन थाए आ प्रेजेंट सहित भी तार कंट्रीब्यूशन थाए देन आपको मिसेकी आम फ्यूचर रे कौन कंट्रीब्यूट कर फ्यूचर रे कौन नुआ जिनस इनोवेशन करके सोशलाइजेशन आम हेल्पफुल हो पार सोसाइटी डेभलप कर आरी ऊपर आम न्यू इन्वेंशन बा न्यू व्यू पॉइंट आम दे था ओके देन मेक बैलेंस बिटवीन सोसाइटी एंड ह्यूमन ओके ये कौन करते हैं ना बैलेंस देते हैं क्या भितर ना सोसाइटी और ह्यूमन भितर ओके देन दिस हेल्प्स टू स्प्रेड ब्रदरहुड इन ऑल राउंड द वर्ल्ड ओके तो सारा विश्व रे ब्रदरहुड बा भ्रातृत्व भाव को एक्सपैंड करिबारे ओके साहाଯ୍य करता है कि ना सोशल स्टडी देन दिस लीड्स टू चेंज ए डायनामिक इन नेचर ओके देन स्कोप ऑफ सोशल स्टडी कौन रोजी इट रेफर्स टू द रेंज एक्सटेंड आउटलुक एप्लीकेशन ब्रीथ एंड एक्सपेंसिव एंड कॉम्प्रिहेंसिवनेस ओके स्कोप रे से कौन एलाबोरेट करछि ना रेंज को एक्सटेंड को आउटलुक को एप्लीकेशन ब्रेथ को ओके देन कॉम्प्रिहेंसिवनेस को भी से एक्सपेंड करुछि रेफर्स करुछि ओके सोशल स्टडी देन सोशल स्टडी इज एन इंटीग्रेटेड स्टडी ऑफ सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटी ओके सोशल स्टडी होछि गोटे इंटीग्रेटेड बा को रिलेशन स्टडी होछि का सहित ना सोशल साइंस और ह्यूमैनिटी स्टडी सहित ओके देन द स्कोप ऑफ सोशल स्टडी इज टू एक्वायर वेरियस सोशल एक्टिविटी ओके सोशल स्टडी स्कोप कौन रोछि ना एक्वायर करने को वेरियस सोशल एक्टिविटी को एक्वायर करवा वेरियस जो विभिन्न प्रकार सोशल एक्टिविटी को आम कौन करवा ना जानिया को चेष्टा करवा ता विषय किसी न्यू नॉलेज गेन करवा ओके ताकू ही कही थाए ताकू ही सोशल स्टडी एक्वायर करने को कही थाए ओके देन द स्कोप ऑफ सोशल स्टडी इज वेरी फास्ट सोशल स्टडी स्कोप बहुत भास्ट ओके बहुत भास्ट कहीं ना इट डील्स विथ द डिफरेंट एरिया बहुत डिफरेंट एरिया सहित ही डील्स करता है कहीं बहुत लोक बहुत मत थाए ना तो पर्टिकुलर इंडिविजुअली जदि आम माने समस्त मत नवा लगे ओके समस्त व्यू पॉइंट आम देखा तो ये बहुत गोटे फास्ट प्रोसीजर हो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसीजर हो ओके रिजल्ट भी लेस मिल कहीं लोक ये गोटे कथा कहे आउ किस दिन पर आउ गोटे कथा कहे ओके सो से आर टे माने आउटपुट टे स्लो आसिया लगी था ओके देन रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड man okay relationship between man and institution relationship between man and earth relationship between man and goods okay so ये सब दिन सहित relationship रहुची then 1.4 distinction between social science and social study कौन रहुची ना so distinction in nature विषय में जानिया first social science is not easy এটা गोटे कौन सी इजी सब्जेक्ट नुहे ओके इट इज प्रोवाइड डिटेल नॉलेज अबाउट रेस्पेक्टिव फील्ड ओके ये कौन करते ना डिटेल टू डिटेल नॉलेज प्रोवाइड करि थाए रेस्पेक्टिव फील्ड रे जे कोनोसी जिंस ऊपर हमें सर्वे करिया को जिबा सोशल सर्वे सोशियोलॉजिकल सर्वे सोशियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट करबा को जिबा तो ता ऊपर हमें डिटेल वाइज रे हमें कौन करबा ना सब नॉलेज को सेतिरे पाइबा को देखा पाइबा कहीं जदि गोटे जिनस सर्वे करवा एक्सपेरिमेंट करवा तो पर्टिकुलर वे से जहाँ जहाँ भी होता है तारी ऊपर सब आम से सिनोप्सिस से थेसिस आमको देखा मिल देन सोशल स्टडी इज कम्प्लीटली सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल फॉर स्कूल चिल्ड्रेन ओके सोशल स्टडी कम्प्लीटली सिंपल आउ अंडरस्टैंडेबल होता है क्या ना स्कूल चिल्ड्रेन मान तार नेचर गला ओके डिस्टिंक्शन इन नेचर देन डिस्टिंक्शन इन व्यू पॉइंट जानिबा सोशल साइंस डील विथ थ्योरेटिकल एस्पेक्ट सोशल स्टडी डील्स विथ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ओके बोथ रे से डील करता है गोटे हूँ थ्योरेटिकल देखो फर्स्ट सोशल साइंस डील करता है थ्योरेटिकल
थियोरेटिकल आस्पेक्ट ऊपर बट सोशल स्टडी डील करते हैं क्या ना प्रैक्टिकल आस्पेक्ट ऊपर ओके कहीं ना सोशल साइंस आम कौन करवा ना थियोरेटिकल ये आम डाटा को ये करवा आक्वायर करवा डाटा को आम गैदर करवा देन सोशल स्टडी द्वारा आम प्रैक्टिकल आस्पेक्ट पुट डाउन कर एक्सपीरियंस को नवा एक्सपीरियंस को गेन करवा तार इनोवेशन हिसाब से जाना न्यू न्यू कौन सब आम न्यू न्यू कौन सब माने जिनस को न्यू न्यू लॉज को न्यू न्यू प्रकार आइडियाज को केमती लोक मान भितर भेरिएशन आनीपर ओके तो ये सब के सोशलाइजेशन कर तो ये कौन ना प्रैक्टिकलिटी उपर कथा आसीज ओके देन डिस्टिंक्शन इन एम कौन ना द एम ऑफ सोशल साइंस इज थियोरेटिकल स्टडी इट प्रोवाइड नॉलेज एंड इनफॉरमेशन ओके तो सोशल साइंस एम हूँ थियोरेटिकल स्टडी उपर जोटा कि नॉलेज और इनफॉरमेशन को प्रोवाइड करें द एम ऑफ सोशल स्टडी इज प्रैक्टिकल यूटिलिटी इट डेवलप इंडिविजुअल इनटू गुड सिटीजन ओके जो कि कौन ना सोशल स्टडी द्वारा प्रैक्टिकल यूटिलिटी आम जापर था जो कि कही था ना इंडिविजुअल और गुड सिटीजन माने आम डेभलप करने को लगी था ओके इंडिविजुअल हिसाब से आम गुड माने भल लोक आम डेभलप कर लगी था कहीं जिते आम गोटे सोसाइटी को क्लीयर करने लगे गोटे सोसाइटी को मेंटेन करने को लगे तो निहाती भाव में लोक मैंने धीरे धीरे निजक सुधार को लगे ओके सो सही हिसाब से आम गुड सिटीजन भी माने डेभलप करुचे ओके देन डिस्टिंक्शन इन इंटीग्रेशन कौन ना सोशल साइंस प्रोवाइड नॉलेज विथ आइसोलेशन ओके सोशल साइंस कौन करते हैं ना नॉलेज विथ आइसोलेशन आमको प्रोवाइड करते हैं देन सोशल स्टडी प्रोवाइड नॉलेज विथ इंटीग्रेशन जोटी सोशल साइंस आमको नॉलेज विथ आइसोलेशन देता है से सोशल साइंस आमको नॉलेज विथ इंटीग्रेशन प्रोवाइड करता है ओके देन डिस्टिंक्शन इन रीडर्स कौन सोशल साइंस रीडर आर लिमिटेड इट इज यूनिवर्सिटी और डिग्री एजुकेशन ओके जो कि कौन ना सोशल साइंस जोटा कि लिमिटेड रहता है जोटा कि यूनिवर्सिटी और डिग्री एजुकेशन नहीं करने को आम पाई था देन सोशल स्टडी गोटे थाए ना सोशल स्टडी आर अनलिमिटेड इट इज एप्लिकेबल फॉर ऑल स्कूल चिल्ड्रेन जोटा कि सोशल साइंस लिमिटेड हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटी डिग्री एजुकेशन देखा मिलता है बट सोशल स्टडीटा इट्स कौन ना एप्लिकेबल फॉर ऑल स्कूल चिल्ड्रेन ओके देन डिस्टिंक्शन इन कॉम्प्लेक्सिटी कौन ना साइंस सोशल साइंस इज कॉम्प्लेक्स डिफिकल्ट टू स्टडी दिस इज यूजफुल फॉर द हायर क्लास स्टूडेंट ओके बेसिकली सोशल साइंस कौन ना डिफिकल्ट टे थाए जोटा कि हायर क्लास स्टूडेंट मानक ही से स्टडी करने को दि जाए बट सोशल स्टडी इट इजी एंड सिंप्लीफाइड स्टडी ओके देन डिस्टिंक्शन इन स्कोप कौन रोची ना द स्कोप ऑफ सोशल साइंस इज वेरी लिमिटेड ओके सोशल साइंस स्कोप लिमिटेड रोची बट सोशल स्टडी स्कोप ऑलमोस्ट अनलिमिटेड ओके तार स्कोप अनलिमिटेड वेरियस प्रकार स्टडी तार स्कोप आमको मिल जाए देन डिस्टिंक्शन इन यूटिलिटी बोथ हाव सोशल यूटिलिटी वन नॉलेज एंड अनदर वन इन एप्लिकेशन ओके जदि आम सोशल साइंस को देखा गोटे नॉलेज उपर डिपेंड करुच्चे तार यूटिलिटी आम सोशल स्टडी जो देखा से एप्लिकेबल एप्लिकेबिलिटी उपर डिपेंड करुच्चे ओके देन डिफरेंस बिटवीन सोशल साइंस एंड सोशल स्टडी कौन अच्छी इट रिप्रेजेंट एन अडल्ट अप्रोच ओके सोशल साइंस रिप्रेजेंट करुच्ची अडल्ट अप्रोच को बट सोशल स्टडी इट रिप्रेजेंट ए चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच ओके then they are the theory part of human affairs okay social science होची गोटे theory part of human affairs but they are the practical part of human affairs social study होची practical part okay आको हम practicability रे apply करि परिबा then emphasize on knowledge जोटा कि social science knowledge ऊपर emphasize करूची आउ हमर social study कोन करूची ना functional part ऊपर emphasize करूची okay जोटा कि हमें applicable करि कि तार experience को gain करि परिबा then social utility is the primary object okay जोटी social utility कोन ना गोटे primary object भाबरे निया जाय माने prime suspect भाबरे निया जाय then एठी social study कहैतिले ना instructional utility is the primary utility okay then आसिला हमारो ओके 1.5 आसिला अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी थ्रू वेरियस सोशल साइंस ओके सोशल स्टडी एंड हिस्ट्री विषय फर्स्ट आम जानिबा हिस्ट्री इज ए पार्ट ऑफ सोशल स्टडी व्हिच कैरीज इनफॉरमेशन ऑफ पास्ट ओके हिस्ट्री होची गोटे एमितिका पार्ट जोटा कि कोन ना ढेर सारा पास्ट रो इनफॉरमेशन को कैरी करता है ओके टिक्के निके खबर ईच एंड एवरीथिंग्स को कैरी करता है कि ना हिस्ट्री ओके देन जो कि कौन एग्जांपल द किंग द टाइम हिज वर्क वार एक्सेट्रा ओके सबू जिनस को हैंडल करते हैं सबू जिनस को आकर कर रखता है कि ना हिस्ट्री
Then the learner will understand the present situation. It is deep rooted in the past. They will be conscious about the future. Okay, जोथिरे कि कौन ना लर्नर माने जानिए को पाई थांती बा अंडरस्टैंड हेई थांती प्रेजेंट सिचुएशन को नै कि आ ता सहित डीप रूटेड पास्ट सहित कौन थिला हम पास्ट रे केमिति कौन हेइतला आ एबे प्रेजेंट रे कौन होउची जोटा कि हमें कॉन्शियसनेस हमर आसी जाई थाए हम फ्यूचर को नै कि जे हमें को जिनसटा करबा नाही जोटा कि फ्यूचर रे हमको प्रॉब्लम हो पास्ट रे प्रॉब्लम रे पड़िथिले बट एबे से जिनस करबानी प्रेजेंट रे से काम को हमें रिपीटेड करबानी जा द्वारा कि हमें फ्यूचर रे प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन को आसी जिबा ओके देन हमें जानिबा स्टडी ऑफ ज्योग्राफी हिस्ट्री जानले स्टडी ऑफ ज्योग्राफी जानिबा ज्योग्राफी एक्सप्लेन द क्लाइमेट कंडीशन ऑफ डिफरेंट region, the boundaries of the country, condition for agriculture, condition for establishment of human society. Okay, basically कौन ना ज्योग्राफी कौन एक्सप्लेन करूँ ना हम क्लाइमेट कंडीशन को डिफरेंट रीजन को बाउंड्री एरियाज को ओके कंट्री कंडीशन को देन सॉरी बाउंड्री एरियाज ऑफ कंट्री देन कंडीशन फॉर एग्रीकल्चर आम एग्रीकल्चर कंडीशन कौन रोची तार एस्टाब्लिशमेंट कौन रोची ओके ह्यूमन सोसाइटी तार कंट्रीब्यूशन कौन रोची ए सब द्वारा आम सॉरी ज्योग्राफी आम ये सब जिनस को ही कौन करता ना कवर अप कर जानवा को आम पाई जे क्लाइमेट कंडीशन कौन डिफरेंट रिजन्स आउ कंट्री बाउंड्री कंडीशन कौन रोची ओके तो यही सब जिनसर नॉलेज आमको ज्योग्राफी ही मिलता है देन इट सेज दैट द वे ऑफ लाइफ ऑफ मैन इज द रिजल्ट ऑफ द फिजिकल सराउंडिंग ओके ज्योग्राफी कही थाए जे कौन नेटा गोटे वे ऑफ लाइफ जो कि कौन ना मैन मान सराउंडिंग फिजिकल माने फिजिकल भौतिक जगत में जहाँ भी रोचे तार रिजल्ट आई ज्योग्राफी ही मिलता है जे केतिकी आमर ज्योग्राफिकल सिचुएशन रोचे आम ग्राफ आ मैपिंग रे आमर केतिकी कौन प्रोजेक्शन रोचे ये सब हमको ज्योग्राफिकल सिचुएशन ही आम जानवा पाई था ज्योग्राफी स्टडी रे ही आम जानवा पाई था कौटी केते डिग्री कौटी केते बाउंड्रीज ओके कौ जगह कौन आमर केतिकी बाटर आमर इंडिया सराउंडिंगनेस रोचे आमर बॉर्डर रोचे ओके आमर क्लाइमेट केमती रहिबो आमर कंट्री कंडीशन कौन होची ओके एग्रीकल्चर कंडीशन कौन होची ए सब ज्योग्राफी माने मुख्य भूमिका रोची देन सोशल स्टडी एंड सिविक्स कौन सिविक्स इज ए सब्जेक्ट एक्सप्लेन अबाउट द गवर्नमेंट स्टेट इट प्रिंसिपल एंड प्रॉब्लम ओके सिविक्स हूँ गोटे एमती सब्जेक्ट जो कि कौन करते ना गवर्नमेंट स्टेट प्रिंसिपल यही सब प्रोब्लेम विषय जानवा पाई जोटा कि कौन कहते हैं सिविक सेंस ओके देन इट इज एक्सप्लेन अबाउट द राइट ड्यूटी एंड कॉमन पीपल ओके जो कि कौन ना आम आम राइट्स आम ड्यूटी आम एक्ट कॉमन मैनेजमेंट विषय ही आम जानवा पाई जोटा कि आम कौन ना एमती कथा कथा एक सिविक सेंस जना ना माने कौन ना जोटा कि आम नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर ओके जो कि आम निजर ड्यूटी निजर राइट्स निजर नीड्स को आम एक्सप्लेन कर ओके जो कि कौन ना कि गवर्नमेंट आउ स्टेट प्रिंसिपल मोराल एथिक्स सब देन सोशल स्टडी एंड इकोनॉमिक आसला इकोनॉमी टीचर अबाउट डिमांड सप्लाई प्रोडक्शन यूटिलिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओके इकोनॉमी टीचर ये डिमांड करते कौन ना डिमांड उपरे सप्लाई उपरे प्रोडक्शन उपरे यूटिलिटी उपरे डिस्ट्रीब्यूशन उपरे एटा इकोनॉमिक उपरे डिपेंड थाए ओके सोशल स्टडी इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन यार होची देन इट प्रिपेयर्स द चाइल्ड टू बी इकोनॉमिकली फाइनेंशियली स्टेबल इन फ्यूचर फॉर ए बेटर लाइफ ओके इकोनॉमिक्स द्वारा कौन होता है ना पिलाटीर नॉलेज आए है जैसे इकोनॉमिकली फाइनेंशियली केमती स्टेबल हम तार फ्यूचर लाइफ को बेटर वे करने ओके बेटर वे निज लाइफ को माने आगो को नबारे से केमिति माने स्किलफुल हो पार ओके देन आसला आमर सोशल साइंस सोशल स्टडी आर सब केते पार्ट रोची कौन ना सिविक्स रोची सोशियोलॉजी रोची पॉलिटिकल साइंस रोची आउ फिलोसफी रोची हिस्ट्री रोची इकोनॉमिक्स रोची ज्योग्राफी रोची कल्चरल रोची ओके कल्चर रोची सो आपको नहीं कि आमर सोशल साइंस आउ सोशल स्टडी कंट्रीब्यूशन आम जानवा पाइले ओके सो लेट्स एंड अप यूनिट 1